Okay, students. So let's get started with IGCSE Physics, May June 2025, paper 2, variant 2. This is a 45 minutes paper, the MCQ paper. Let's start with that. Okay, so let's zoom in a bit here. Okay. So which instrument, okay, so which instrument is most suitable? Which instrument is most suitable to determine the volume of a small, irregularly shaped stone? Always remember that if your stone is irregularly shaped and you have to determine the volume of that stone, you will be using a measuring cylinder. C is your answer. Let's further move ahead. A steel ball is dropped from the top of a building. Okay. Air resistance can be ignored. Okay. So air resistance is ignored. Whenever air resistance is ignored, your acceleration equals to what? बेटा जब भी आपकी एयर रेजिस्टेंस इग्नोर हो जाती है वेन एवर एयर रेजिस्टेंस गेट इग्नोर्ड योर एक्सेलरेशन बिकम्स कांस्टेंट and that constant value is equals to the gravitational field strength. Okay. अब अगर आप अर्थ पे हो तो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 होगी. सिंपल. So whenever air resistance is ignored, you can write this as a key point as well. Whenever air resistance is ignored, your acceleration becomes a constant value. That constant value is equals to the gravitational field strength on that planet. For Earth, the gravitational field strength is 9.8 meters per second square. Any answers like that, the balls fall with a constant acceleration. A is your answer. Okay. The diagram shows a velocity time graph for an object which is accelerating. You have to calculate acceleration of the object. Always remember gradient of velocity time graph beta kya hota hai? Acceleration. This is your first point 0 comma y axis mein 20. This is your second point that is 40 comma 120. दोनों points को यहाँ पे लिख लो बेटा. Write down both the points. This comes out to be 0 comma 20, 40 comma 120. This is x1 y1, this is x2 y2. What will your gradient or acceleration come out to be? Y2 minus y1 over x2 minus x1. What is your y2? 120. What is your y1? 20. What is your x2? 40. What is your x1? 0. What does your acceleration comes out to be? 100 divided by 40. That equals to what? बेटा आपकी acceleration क्या आ गई? 100 divided by 40. That is equals to 2.5 meters per second square. B is your answer. Acceleration आपकी क्या आ गई? 2.5 meters per second square. Let's further move ahead. Diagram 1 shows a piece of flexible material that contain many pockets of air. Okay. This is a piece of flexible material that contains many pockets of air. Okay. Diagram 2 shows the same piece of flexible material after it has been compressed so that its volume decreases. ठीक है. Diagram 2 क्या दिखा रहा है? Volume decrease करता हुआ दिखा रहा है. What happens to the mass and to the weight of the flexible material when it is compressed? अच्छा जी. What happens to your mass and what happens to your weight when the material is compressed? हमेशा याद रखो your mass remains unchanged no matter whatever you do. Option A और B cancel out हो गया. And here you are undergoing compression. बेटा compression undergo कर रहे हो तो आपका weight भी unchanged रहेगा. D is your answer. Mass remains unchanged, weight remains unchanged. Okay. A student determines the density of copper. What is the formula of density? Density is equals to mass over volume. Perfect. She has a rectangular block of copper. Okay. Which other apparatus does she need? ठीक है. आपने density determine करनी है तो you need to know the mass and volume. Mass किससे determine करोगे? Using a beam balance. बेटा mass किससे determine करोगे? Using a beam balance. Volume किससे determine करोगे? This is a rectangular block. तो वॉल्यूम किस तरह डिटरमाइन करोगे? यू विल मेजर द साइड्स यूजिंग अ रूलर. आप साइड्स को मेजर करोगे यूजिंग अ रूलर एंड देन यू विल अप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. So basically, you need a ruler and a beam balance. Which answer will you choose? C is your answer. Simple. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा.
अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे. A 0.15 kg mass is suspended from a vertical spring. Okay. The mass is pulled downwards until the spring has an extension of 12 centimeter from its unstretched length. Okay. So how much extension do you have? You have an extension of 12 centimeter. Okay. The spring constant is this value. Okay. This is the value of K. Perfect. What is the magnitude of initial acceleration? You have to calculate acceleration of the spring when it is released. So let's say this is your spring. Let's make the diagram. You have attached a mass to it. Let's say this mass is of 0.15 kg. What will be the weight of this mass? Beta, is mass का weight क्या होगा? What will be the weight of this mass? इस mass का weight क्या होगा? Acting downward, that is mg, that is 0.15 into gravitational field strength, that is 9.8. What will be the weight of this mass? 0.15 into 9.8. This comes out to be 1.47 Newton. Now, can you also calculate the tension in this spring? बेटा इस स्प्रिंग में टेंशन निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे? How will you calculate the tension in this spring? Any ideas, geniuses? How will you calculate the tension in this spring? You will apply tension or force is equals to K. K की वैल्यू क्या है? 30. What is your extension? 12 centimeter. Convert it into meters. 0.12 meters. Multiply कर दो बेटा 0.12 से. What does your tension comes out to be? हाँ जी, टेंशन क्या आती है? 30 into 0.12. टेंशन comes out to be 3.6 न्यूटन. हाँ जी, इसको थोड़ा सा मैं राइट साइड पे कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी द डायग्राम. जो आपकी अपवर्ड फोर्स ऑफ टेंशन है वो 3.6 न्यूटन है. डाउनवर्ड फोर्स क्या है? 1.47 न्यूटन. कैन यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स? बेटा रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो. यस, 3.6 minus 1.47, this comes out to be what? 3.6 minus 1.47, this comes out to be 2.13 न्यूटन is your resultant force. सर आपने resultant force कैसे निकाली? How did you calculated the resultant force? Up force of 3.6 Newton minus the down force of 1.47 Newton. Now resultant force का फॉर्मूला क्या होता है? Mass into acceleration. 2.13 मास क्या है बेटा आपका? 0.15 into acceleration. What does your value of acceleration comes out to be? And ये acceleration की value क्या आ गई बेटा? 14.2 meters per second square. That is your option A. Easy peasy lemon squeezy. कोई complicated बात नहीं की है. Let's further see. A cricket ball of mass 0.15 kg is moving with a speed of 30 meters per second. ठीक है भाई, ये cricket ball है जो कि move कर रही है with a speed of 30 meters per second. Okay. The diagram shows a batsman holding a bat stationary as the ball hits the bat and bounces back at the same speed in the opposite direction. ठीक है भाई, बॉल आपकी सेम स्पीड में ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 30 meters per second. The ball is in contact with the bat for this amount of time. This is your contact time. Perfect. The table shows the change in momentum of the ball and the magnitude of the applied force. Okay. Which row is correct? First of all, let's calculate the change in momentum. Change in momentum is equals to final momentum minus initial momentum. बेटा लेट से हम ये कह देते हैं कि right side vectors are considered to be positive, left side vectors are considered to be negative. What will be your final momentum? The mass of 0.15 kg multiplied by the final velocity that is towards the left side, that is negative 30, minus initial momentum. Initial momentum क्या है? Mass of 0.15 kg multiplied by the velocity that is acting towards the right. It will be positive. Okay, what will your change in momentum come out to be? 0.15 into 30. This is negative 4.5 minus 4.5. Your change in momentum comes out to be negative 9 or positive 9, doesn't matter.
Beta, if your change in momentum comes out to be -9, +9, doesn't matter. It's just a matter of the axes. It's just a matter of the axes. If I took the reverse axis, बेटा अगर मैं axes को reverse कर दूं तो आपका +9 भी आ जाएगा. The negative or positive doesn't matter. Let's say I took the right side vectors as negative, left side vectors as positive. Now see the magic. Change in momentum is equals to final momentum minus initial momentum, है ना? Final momentum किस तरह निकालोगे? You have a final velocity that is acting towards the left. Now you have assumed all the velocities acting towards the left are considered to be positive. Mass of 0.15 into velocity of 30. Minus initial momentum, your initial velocity is towards the right, negative sign. 0.15 negative 30. This comes out to be 4.5 negative negative 4.5. This comes out to be 9 kg meters per second is your change in momentum. A will not be your option, B will not be your option. Now you have to calculate the force. How will you do that? Force is equal to change in momentum over change in time. Change in momentum beta kya hai? 9. What is your time? 1 into 10 is the power of -3. What will your force comes out to be? 9,000 Newton. D is your answer. Change in momentum 9 hai, force 9,000 hai. Let's further move ahead. A stone is thrown vertically upwards at a speed of 5 meters per second. All of the energy, all of the energy initially in the kinetic energy store of the stone is transferred into gravitational potential energy store when the stone reaches its maximum height. अच्छा जी हो क्या रहा है देखो. Basically एक stone है. Let's draw the diagram. Let's say you have a stone like this. Initially, it has a velocity of 5 meters per second. At the maximum height, velocity becomes zero as all the kinetic energy gets converted into gravitational potential energy. You have to calculate this maximum height reached. How will you do that? You will say kinetic energy gets converted into gravitational potential energy. What is the formula of kinetic energy? 1 upon 2 mv square. What is the formula of gravitational potential energy? mgh. M cancel out. Let's make h the subject. V square divided by 2g is equals to h. What is the velocity? 5 का square divided by 2 into 9.8 is equals to your h. C is your answer. 8 का answer is what? C. Simple. Let's further move ahead. 3 energy stores are listed. बेटा 3 energy stores जो हैं वो list हुए हुए हैं. Which source gives their energy from sun? कौन से source में energy आती है from the sun? Obviously from wind energy. Wind energy gets its source of energy directly from the sun. D is your answer. सिर्फ और सिर्फ wind energy ऐसी होती है जिसकी energy directly from the sun आती है. A sample of a substance has a shape that is determined by its container. This is a property of what? Both gases and liquids. बेटा ये gas और liquid दोनों की property. No, this is not a property of solid. B is your correct answer. देखो गैस और लिक्विड की हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है कि इन विच एवर कंटेनर यू पुट देम, किसी भी कंटेनर में अगर आप गैस और लिक्विड को डालते हो ना तो वो उस कंटेनर का शेप अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है. देयर इज अ फेमस आई थिंक ब्रूस ली का कोई कोड भी है रिगार्डिंग दिस. बी लाइक वाटर, वट एवर योर सर्कमस्टांसेस आर, अडॉप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट. तो इस तरह का कोई कोड भी है. आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर दैट एग्जैक्टली राइट नाउ. A stationary smoke particle is hit by a fast moving nitrogen molecule. अच्छा जी, ये स्मोक पार्टिकल है, इसको आके नाइट्रोजन हिट करता है बहुत जोर से. ओके, what will happen? Obviously the smoke particle will start moving. C और D cancel out हो जाएगा. What will happen to the nitrogen molecule? हो सकता है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रीबाउंड कर जाए like this. A is your answer. अच्छा जी, a bubble of gas rises from the bottom of a lake to the top. Okay. The table shows readings of the gas pressure inside the bubble and the volume of the bubble. ठीक है भाई, गैस प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द बबल की रीडिंग्स जो मैंने, प्रेशर और वॉल्यूम की रीडिंग्स जो मैंने.
The temperature of the gas remains constant. Okay, the values in three rows of the table are correct and one row is not correct. Which row is not correct? Okay, कौन सी रो correct नहीं है? Perfect. Let's see. बेटा क्या आपको याद है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ क्या कहता था? If your temperature is constant, pressure versus volume का product will always give a constant value. Boyle's law बेटा ये कहता था कि if your temperature is constant, if you multiply the values of pressure and volume, you will always get a constant value. Boyle's law सिंपल अल्फाजों में ये कहता था pressure was inversely proportional to volume. When you multiply pressure with volume, you get a constant product. Simple. Let's apply it here. Let's apply in option A. Option A में apply करते हैं भाई. Now, in option A, can you realize pressure? P1 क्या है? 360. I am ignoring the units. Currently, I am ignoring the units. Volume is in centimeter cube. Okay, no problem. This is V1. Ignore the units for the time being. Let's multiply P1 V1. 360 into 2.4. आपका आंसर क्या है? 360 into 2.4 आंसर क्या आ रहा है? 864. ओके, बी को एनालाइज करते हैं. दिस इज योर P2, दिस इज योर V2. P2 V2, P2 की वैल्यू क्या है? 270. V2 की वैल्यू क्या है? 3.2. 270 into 3.2. What does your answer comes out to be? 364. Okay. बेटा these are giving constant values. देखो बॉयल्स लॉ में ये होता था बच्चे, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता था तो जब आप प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते थे तो यू ऑलवेज गेट अ कांस्टेंट आंसर. लेट्स सी वेयर डू वी नॉट गेट अ कांस्टेंट आंसर. दिस इज P3, दिस इज V3. P3 क्या होगा? P3 इज 160, V3 इज 4.6. क्या आंसर आएगा? 160 into 4.6. This comes out to be 736. Now this is not constant. Let's calculate the value for D as well. This is P4. This is V4. 120 into 7.2. What does your answer comes out to be? 864. बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो ऑप्शन ए में भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, ऑप्शन बी में भी कांस्टेंट वैल्यू, ऑप्शन सी में भी कांस्टेंट वैल्यू. However, the only different option is option C. प्रेशर और वॉल्यूम को सी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी गेट अ डिफरेंट वैल्यू. वी डोंट गेट 864. सी इज योर आंसर. सी डज नॉट सैटिस्फाई बॉयल्स लॉ. चलिए ये देखते हैं. द डायग्राम शोज अ ग्लास फ्लास्क दैट इज सील्ड with a small volume of mercury in the glass tube. Okay, when the flask is gently warmed, आप temperature increase करते हो, the mercury rises up the tube. What is the main cause of the movement of the mercury? Mercury क्यों ऊपर move करता है? Due to the expansion of air in the flask. Due to the expansion of air in the flask, mercury moves to the top side. A is your answer. Let's further move ahead. The diagram shows the equipment used in an experiment to determine the specific heat capacity of a metal. Okay. In an experiment, the heater is switched on for time t seconds and the increase in temperature delta theta of a block is measured in degrees centigrade. Which equation gives the specific heat capacity of the metal? बेटा specific heat capacity किस तरह निकालते थे? Q is equals to mc delta T. Yeah, here your change in temperature is represented with what? Delta theta. So let's represent it like that. Delta theta. You have to make a specific heat capacity. See your subject. आप क्या करोगे? Q divided by mass into delta theta. अब ये एनर्जी किस तरह निकालते थे? डू यू रिमेम्बर हाउ डिड वी कैलकुलेटेड एनर्जी? बेटा हीटर की पावर लेते थे, मल्टीप्लाई करते थे विद टाइम. Power into time divided by mass into delta theta is equals to your specific heat capacity. B is your answer. Simple. Let's further move ahead. The diagram shows four rods. Okay, we have four rods. Each rod is made of a different metal. Okay. Wax is attached to the small metal balls at the end of rod P, Q, R and S. ठीक है, wax attach किया हुआ है
स्मॉल मेटल बॉल्स के फॉर्म में एट द एंड ऑफ ईच रॉड इज द सेम साइज. ओके. They are heated uniformly by a Bunsen burner at point X. सही है, सबको uniformly heat कर रहे हैं at point X. Okay. As the rod warms, the wax melts and the balls fall off. Okay. Why does the ball fall off on the silver rod first? बेटा सिल्वर रॉड से बॉल पहले क्यों फॉल ऑफ कर जाती है? Why does the ball falls off the silver rod first? क्यों ऐसा क्यों है? Because if you are heating all the four rods at point X, ऐसा हो सकता है कि silver is the best conductor of heat. Silver conducts heat in the most appropriate manner, या सबसे अच्छे मैनर में हीट कंडक्ट करता है. Hence जल्दी जल्दी हीट कहाँ फ्लो कर जाती है? वैक्स पे. वैक्स मेल्ट कर जाता है एंड आपकी रॉड फॉल कर जाती है. A is your answer. Silver is the best conductor of heat. It causes the wax to melt and the ball falls off. Three solid copper spheres X, Y and Z are heated to same temperature. ठीक है, आपके पास तीन कॉपर के spheres हैं that are heated to the same temperature. Okay. Which row gives the order of emission of radiation? कौन सी रो हमें बताती है कि हाईएस्ट रेट ऑफ एमिशन किसका होगा, सेकंड हाईएस्ट किसका होगा, लोएस्ट किसका होगा? कैन यू रियलाइज ब्लैक हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ एमिशन, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाईएस्ट रेट ऑफ एमिशन किसका हो जाएगा? एक्स का. जेड. जेड वाले ऑप्शंस कैंसिल आउट. ओके. देन यू हैव टू ऑप्शंस, बोथ ऑफ देम आर वाइट. अब वाइट में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे बेटा? इसका डायमीटर ज्यादा होगा, बिकॉज एज योर डायमीटर इंक्रीजेस योर रेट ऑफ एमिशन इंक्रीजेस. तो फर्स्ट आ जाएगा आपका एक्स वाई बिकॉज इट इज ब्लैक एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 2D. सेकंड आ जाएगा जेड बिकॉज इट हैज अ डायमीटर ऑफ 2D एंड इट इज वाइट. देन यू विल हैव द लोएस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाई. फर्स्ट एक्स होगा, सेकंड जेड होगा, थर्ड वाई होगा. बी इज योर आंसर. सिंपल. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 17 बेटा. Which wave will diffract the most when passing through a gap of 0.85 meter wide? ठीक है, आपको ये गैप साइज गिवन है. यू हैव टू टेल विच वेव विल डिफ्रैक्ट मोर. तो ऑलवेज रिमेंबर द वेव विच हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ. The wave which has the highest wavelength or the maximum wavelength will diffract the most. Okay, so let's start calculating the wavelengths. Let's look at option A. Your wave speed is 300. Your frequency is 280. Can you calculate lambda? Yes, V is equals to F lambda. 300 is equals to 280. Lambda 300 divided by 280. बताओ wavelength की क्या value आ रही है भाई? Wavelength की क्या value आ रही है? 300 divided by 280. Wavelength की value comes out to be what? 1.1 meters. Let's try out option B. V क्या है? 300. Frequency क्या है बेटा? 400. Can you calculate wavelength? V is equals to F lambda. V क्या है? 300. Frequency is 400. Can you calculate wavelength? 3 divided by 400. Your wavelength comes out to be what? 0.75 meters. Okay. We are only concerned with the wavelength, so highlight the wavelengths. हमें वो वेव चाहिए जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो बेटा. तो where should we keep this working? Let's keep it here. ठीक है. अब ऑप्शन सी डी को भी एनालाइज कर लें छोटा छोटा करके. चलो, सी में आपकी स्पीड क्या है? 350. फ्रीक्वेंसी क्या है बेटे? 280. v इज इक्वल टू एफ लैंडा लगा दिया जाए. चलो, वेलोसिटी आपकी हो गई 350. फ्रीक्वेंसी 280 डिवाइड कर दो. वेवलेंथ बताओ बच्चे क्या आ रही है? 350 डिवाइडेड बाय 280. योर वेवलेंथ कम्स आउट टू बी 1.25 मीटर्स. मुझे लग रहा है ये सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होनी. ऑप्शन डी भी कैलकुलेट कर लो. V is 350. Frequency is 400. Can you calculate lambda? V is equals to F lambda. 350 divided by 400. Lambda क्या आ जाएगा भाई? 350 divided by 400. This comes out to be 0.875 meters. Which will give the largest diffraction beta?
जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? ऑप्शन सी 1.25 मीटर। सी इज योर आंसर। Which arrow on the graph shows the amplitude of the wave? Amplitude is always marked from the mean position to the maximum position. B is your answer. Which row describe seismic S waves? Seismic S waves कौन सी होती हैं? Longitudinal. Sorry, my bad. Sorry, my bad. Seismic S waves are which waves? Transverse waves. यहाँ पे लिख देता हूँ, seismic S waves are transverse waves and seismic P waves कौन सी होती हैं? Seismic P waves are longitudinal waves। बच्चों ये बात याद रखना। Seismic P waves कौन सी होती हैं? Longitudinal। Seismic S waves कौन सी होती हैं बेटा? Transverse। और transverse wave क्या करती हैं? They travel perpendicular to the direction of wavefront. D is your answer. Let's move on to page question 20. The image of an object is formed by a plane mirror. Okay. Which row gives the correct properties of the image? हमेशा याद रखो, मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, and it will be the same distance from the mirror as the object. D is your answer. Further move ahead करो भी. A ray of light is traveling in air, is incident on a air glass boundary. The angles between the incident ray, refracted ray, and the boundary are shown. Which equation is used to calculate the refractive index of glass? Glass is the second medium. बेटा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? साइन आई ओवर साइन आर। व्हाट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस? दिस वैल्यू। ये क्या हो जाएगा बेटा? इफ द टोटल एंगल इज 90 डिग्री, व्हाट विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस? 90 माइनस 50। एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री हो गया। योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री। व्हाट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? ये वाली चीज। How will you calculate angle of refraction? The entire angle is 90. 90 minus 64 is equals to your angle of refraction. That comes out to be what? Angle of refraction आपका आ जाएगा 26. Sin 40 divided by sin 26 is your refractive index. 21 का answer is A. Let's further move ahead. A small object O is placed near a converging lens as shown. The lens form an image I. ठीक है, एक image I form हो रही है यहाँ पे. Which statement is correct? बेटा ये image जो है वो क्या है? लेंस के पीछे फॉर्म हो रही है. This image is being formed behind the lens. What does this tell us? This tells us that this object will be placed between the focal point and the optical center. बेटा ये हमें क्या बताता है? कि ऑब्जेक्ट जो हमने प्लेस किया है वो फोकल पॉइंट से करीब प्लेस किया है, या ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में प्लेस किया है. दिस इज व्हाट दिस टेल्स अस. क्योंकि जब भी आपकी इमेज जो है वो बैक साइड पे बन रही होती है या लेंस से पहले बन रही होती है, यू हैव प्लेस द ऑब्जेक्ट बिफोर द फोकल पॉइंट. ठीक है, फोकल पॉइंट से पहले या फोकल पॉइंट से क्लोजर प्लेस कर दिया. बेटर वर्डिंग वुड बी दैट. ठीक है, तो आर देयर एनी ऑप्शन लाइक दैट? द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द लेंस देन इट्स प्रिंसिपल फोकस. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंसिपल फोकस से पहले प्लेस कर दिया है, या यू कैन से ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस. डी इज योर आंसर. What is the speed of light in air? Simple, easy peasy. 3 into 10 is the power of 8 meters per second. This was a very easy to score thing. Let's see this. A ship sends an ultrasound pulse to the seabed to measure the depth of the sea. Okay. So this is a ship. Perfect. एक शिप क्या कर रही है? इट इज सेंडिंग अल्ट्रासाउंड पल्सेस टू द डेप्थ ऑफ द सी. ये सी बेड पे अल्ट्रासाउंड पल्सेस जो है वो भेजी जा रही है. समवॉट लाइक दिस. Okay, they get reflected from the seabed like this. Perfect. What is the speed of ultrasound? This. What is the time taken for the pulse to travel to the seabed and back to the ship? This is the total time. बेटा आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है. कैन यू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस? यप. टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड क्या है? 1500. टाइम क्या है बेटा? 4.6. कैन यू कैलकुलेट दिस?
1500 into 4.6. This comes out to be what? 6900 meters. ये क्या है? ये टोटल डिस्टेंस है. ये वो डिस्टेंस है जो अल्ट्रासाउंड नीचे ट्रैवल कर रही है, सी बेड को हिट करके वापस ऊपर आ रही है. दिस इज द टोटल डिस्टेंस बच्चे. दिस इज द टोटल डिस्टेंस. दिस डी इज योर टोटल डिस्टेंस. कैन यू कैलकुलेट द सिंगल डिस्टेंस, द डेप्थ ऑफ द सी? कैन यू कैलकुलेट द सिंगल लाइन डिस्टेंस? यप. आप क्या करोगे? 6900 डिवाइडेड बाय 2, that roughly comes out to be 3450. That is roughly equal to 3500 meters. C is your answer. Okay, आगे बढ़ते हैं. A dolphin has a range of audible frequencies 150 हर्ट्ज से लेकर 150 किलो हर्ट्ज तक. ठीक है. एक डॉल्फिन की रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज क्या है बेटा? 150 हर्ट्ज से लेकर 150 किलो हर्ट्ज. ओके. Which range of frequencies can be heard by both humans with good hearing and by dolphins? बेटा ह्यूमंस की ऑडिबल हेयरिंग क्या होती है? ह्यूमंस की ऑडिबल हेयरिंग क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज. डॉल्फिन की क्या है? 150 हर्ट्ज से लेकर 150 किलो हर्ट्ज. सो विच कैन बी हर्ड बाय बोथ डॉल्फिन एंड ह्यूमंस? लेट्स ट्राई आउट ऑप्शन ए. 20 हर्ट्ज से लेकर 150 हर्ट्ज. 20 hertz cannot be heard by the dolphin because dolphin lowest frequency कितनी hear कर सकता है? 150. Then again same issue here. Say ना, not the same. C में देखो क्या है? 20 किलो हर्ट्ज. ये तो डॉल्फिन भी हेयर कर सकती है, ह्यूमन भी. बट देन यू हैव 150 किलो हर्ट्ज. ह्यूमन कैन नॉट हेयर 150 किलो हर्ट्ज. कैंसिल दिस आउट. ऑप्शन डी को चेक करो. Option D may you have the lowest frequency as 150 hertz. Both the humans and dolphin can hear this. Then you have 20 kilohertz. Both the humans and dolphin can hear this. D is your answer. A positively charged balloon is placed against the wall. Okay. The charge makes the balloon stick to the wall. Which statement explains this? ठीक है. Positively charged balloon जो है वो wall के against place किया हुआ है. The charge makes the balloon stick to the wall. Which statement explains this? The positive charge on the balloon attracts what? The negative charges or electrons on the wall. A is your answer. अच्छा जी. A student is trying to determine the resistance of a lamp. Resistance का formula क्या होता है? Voltage over current. He sets up the incorrect circuit shown. Which change would allow him to take the measurements needed to calculate the resistance of the lamp? Resistance of the lamp कैसे निकलेगी बेटा? ये इनकरेक्टली सेटअप किया हुआ है आपने. एम मीटर तो सही लगाया हुआ है. एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. वोल्ट मीटर किस तरह लगता है? ऑलवेज इन पैरेलल. तो आपका सर्किट किस तरह से चेंज होना चाहिए? वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में लगा दो, आपका काम हो जाएगा. एनी आंसर्स लाइक दैट? डिस्कनेक्ट द वोल्ट मीटर एंड कनेक्ट इट इन पैरेलल विद द लैम्प. डी इज योर आंसर. लेट्स सी दिस. अ मेटालिक वायर एक्स हैज अ रेजिस्टेंस. ओके. What is the difference in resistance for a wire of the same material as X that has a shorter length but same diameter? हमें क्या पता है? Resistance is directly proportional to length. If you decrease the length, resistance decreases. तो A और B option cancel out हो जाएंगे. Resistance of shorter wire will be smaller. Okay. And we have to calculate the resistance of a wire with a greater diameter. What do we know? Oh, sorry, smaller diameter. What do we know? Resistance is inversely proportional to area. If your diameter becomes small, your area becomes small, your resistance will be greater. C is your answer. If your diameter becomes smaller, your resistance becomes greater. और अगर आपकी length छोटी हो रही है तो आपकी resistance कम हो जाएगी. C is your answer. Okay. The diagram shows the circuit for a potential divider. Which equation is used to calculate V1? बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि पोटेंशियल डिवाइडर के लिए हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी? V1 over V2 is equals to R1 over R2. We studied this equation for the potential divider. We have to calculate V1. How will we do that? Multiply V2 to the other side. V1 is equals to R1 into V1 divided by R2. This is the equation for potential divider. Always remember that. ठीक है. ये इक्वेशन होती है फॉर पोटेंशियल डिवाइडर जिसमें V1 क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 1. R1 क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टर. V2 क्या होता है? द वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड रेजिस्टर. R2 क्या होता है? द वोल्टेज अक्रॉस द
Second resistor R2 is your resistance of the second resistor. Any answers like that? B is your answer. 30 पे आ जाओ. Which electrical device is used to convert AC to DC? Diode. A is your answer. A cell is connected to a parallel combination of 2 ohm resistor and a 4 ohm resistor. The current in the 4 ohm resistor is 1 ampere. Current in 4 ohm resistor is 1 ampere. ठीक है. बेटा अगर 4 ओम वाले रेजिस्टर में 1 एम्पियर करंट है, इफ यू हाफ द रेजिस्टेंस, देखो 4 से 2 जा रहे हो, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी. व्हाट विल हैपन टू द करंट इफ योर रेजिस्टेंस हाफ्स? व्हाट विल हैपन टू द करंट? योर करंट डबल्स. ये करंट क्या हो जाएगा बेटा? 2 एम्पियर. This branch has 2 ampere, this branch has 1 ampere. What will be the total current? 2 plus 1, that is equals to 3 ampere. D is your answer. आगे बढ़ते हैं बेटा. Okay. When there is an electric current in a long straight wire, a magnetic field is created around the wire. Which diagram shows the correct pattern and direction of magnetic field a, around a long straight wire carrying current into the page? अच्छा जी. बेटा कौन सी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं फॉर अ वायर कैरिंग करंट इनटू द पेज? Can you remember that if you are carrying current into the page, your magnetic field lines will be in which direction? In the clockwise direction. और clockwise direction में क्या हो रहा होगा? The distance between the magnetic field lines will keep on increasing. Increase कर रहा है distance between the magnetic fields. B is your answer. Let's further move ahead. The primary voltage supplied to a transformer is this. This is your VP. The secondary voltage supplied to the transformer is this Vs. The secondary current is this. You have to calculate primary current. IP निकालना है. How will you do that? You will say IP over IS is equals to Vs over VP. क्या आपके पास IP की वैल्यू है? नहीं है सर. तो कीप इट लाइक दिस. क्या आपके पास IS की वैल्यू है बच्चे? IS की वैल्यू इज 2. क्या आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू है? यस 5. क्या आपके पास प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू है? यस 3. कैन यू कैलकुलेट द प्राइमरी करंट? यस 10 over 3, that is 3.3 ampere. That comes out to be C as your answer. Let's move on to question number 34. When a tiny gold foil is bombarded with alpha particles, some alpha particles are deflected through large angles. कुछ alpha particles जो हैं वो large angle से deflect हो रहे हैं. Which statement explains this deflection? All of the positive charge and most of the gold atoms are concentrated in a small volume. Hence, very few alpha particles get deflected. देखो हमने इसकी रीजनिंग क्या देनी होती है कि बहुत स्मॉल अमाउंट में अल्फा पार्टिकल्स क्यों डिफ्लेक्ट हो जाते हैं? Because very small amount of the atom is positively charged and contains most of the mass. B is your answer. A detector near a radioactive source shows a reading of 2000 counts per minute. How is the corrected count rate determined? हमेशा हमेशा याद रखो, whenever you have to determine the corrected count rate, whenever you have to determine the corrected count rate of a radioactive source, you minus what? You minus the background radiation. Any option like that? By taking away the background radiation, D is your answer. Which statement about alpha, beta and gamma radiation is not correct? कौन सा statement correct नहीं है बेटा? Alpha particles are deflected most in an electric field. This is incorrect. Beta particle जो है वो most deflect होते हैं in an electric field. A sample of a radioactive material has a half-life of 20 minutes. Which statement is correct? After 30 minutes, less than half of the material has decayed? No. After 40 minutes? No. After 60 minutes, an eighth of the radioactive material remains. चलो कर लेते हैं try. Let's say at time t is equals to 0, your material is x. After 20 minutes, it will become half x. After further 20 minutes, it will become 1 over 4x. After further 20 minutes, it will become 1 8x. That means what? 60 minutes के बाद 20 plus 20 plus 20, 60 minutes के बाद you have 1 over 8 of the original value. Yes, C is correct. Which statement is correct? The Earth orbits the Sun in approximately 24 hours. No. The Earth orbits the Moon
in approximately 1 week? No. The moon orbits the earth in approximately 1 month. C is correct. Yep. 28 days का lunar cycle होता है. I hope you remember. The stars are powered by nuclear reaction that release energy. Which statement describe the nuclear reaction in stable stars? हमेशा 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 याद रखो कि स्टार्स में फिजन नहीं होती. स्टार्स में होती है फ्यूजन. और फ्यूजन भी क्या होती है? फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू गेट कन्वर्टेड इनटू हीलियम. हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे होते हैं. लेट्स मूव ऑन टू 40. A galaxy is moving away from Earth at a speed of this. This is your speed of recession. What is the distance between the Earth and galaxy? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? V is equals to h naught d. Do you remember the value of Hubble's phase constant? 2.2 10 raised to the power of minus 18. V क्या है बेटा? 3000 and then you have a kilometer here. So you will multiply by 10 raised to the power of 3. Always remember जब भी आपने किलो का prefix replace करना होता है you multiply it by what? 10 raised to the power of 3 is equals to h naught 2.2 10 raised to the power of minus 18 d. Can you calculate the value of d? Yes, 3000 into 10 raised to the power of 3 divided by 2.2 10 raised to the power of minus 18 is your value of d. D comes out to be what? 1.4 10 raised to the power of 21 meters. C is your answer. This marks the end of this paper. If you have any questions, you can ask in the comments below.